we obviously had a very good time shooting it, but it was also very challenging because we were shooting during the pandemic. इतने सारे messages चाहे इंडस्ट्री से या इंडस्ट्री के बाहर मुझे आज तक नहीं मिले हैं, तो it's been great कि एक एक्टर बहुत लकी होता है क्योंकि सब अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक एक्टर जो है बहुत अलग-अलग जिंदगियां जीता है। हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से आगे कहाँ? ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जो क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी चूज करते हैं इन द रिगार्ड्स ऑफ व्हाट प्रोजेक्ट्स दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। और वैसे ही एक कलाकार है जिनका नाम है कुणाल कपूर, जिनको आप लोग जानते पहचानते हैं रंग दे बसंती के वन ऑफ द पॉपुलर फेसेस में से, जिनको आपने देखा था मूवी हैट्रिक में भी अमंग्स्ट मेनी अदर वर्क्स आउट देयर। वो लौट के आए हैं आप एक नए प्रोजेक्ट एम्पायर के साथ, जहां वो नजर आए हैं एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही उम्दा किरदार में। आपको बता देते हैं कि इस किरदार के लिए कुणाल ने काफी सारी प्रेपरेशंस करी थी और आज मेरे यानी विशाखा के साथ चैट सेशन में कुणाल करेंगे शेयर इन प्रेपरेशंस के पीछे की कहानी एंड अ लॉट मोर अबाउट हिज जर्नी एंड स्ट्रगल्स। तो आइए चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करे बुलाते हैं कुणाल को और जानते हैं कि व्हाट डज कुणाल कपूर वांट टू शेयर विद अस इन टुडेस चैट सेशन। Well, I would say it's a pleasure having you today, Kunal, here at Telly Chakkar, and firstly welcome to Telly Chakkar. कैसा था सफर आपका? If I talk about the series Empire, how was your journey with the series? Well, it's been amazing. Obviously, it was a lot of fun shooting it. Just the scale of it, the ambition of it, the vision of it, चाहे वो action हो, चाहे costumes हो, चाहे जिस तरह के characters लिखे गए हों, और चाहे जो detailing हो, हर चीज में जो detail के ऊपर ध्यान दिया गया था, everything was amazing. And we obviously had a very good time shooting it, but it was also very challenging because we were shooting during the pandemic. And we were supposed to finish the show in about 4 months, but we took about a year and a half because we had to start and then stop and then start and then stop. And especially when you're shooting all the action scenes, you have hundreds of fighters and junior artists and horses and elephants, and you're wearing a mask before every shot, taking it off, sanitizing your hands after every shot. So it was very challenging, a lot of fun, but I think it's all been worth it because of the reception that it's got. I don't think any work that I've ever done has got this sort of reception. Of course, Rang De Basanti, but during that time we didn't have social media. अब social media पे आपको immediately पता चल जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं और उनको कैसे लगा है और क्या लगा है। इतने सारे messages चाहे इंडस्ट्री से या इंडस्ट्री के बाहर मुझे आज तक नहीं मिले हैं, तो it's been great. But then I'm quite curious to know one thing, क्योंकि एक सीरीज है जिसमें आपको अपने लुक पे बहुत काम करना पड़ता है, but then वही लुक आपको कम से कम 1.5-1.25 साल जो भी लॉकडाउन का है, you have to maintain that. Obviously, like how difficult was it for you to actually maintain that entire look that you had for the series, so that दोबारा से वो स्क्रैच से मेहनत ना करनी पड़े, वो लुक ना चली जाए, वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? जी चैलेंजिंग तो नहीं, मतलब जिस दिन शूटिंग खत्म हुई उन्होंने बोला आज आखिरी दिन है, मैं घर आया, मैंने शेव किया और अगले दिन मैंने जाके अपने बाल कटवाए क्योंकि बोला बहुत हो चुका, 1.5 साल से जानवर की तरह जी रहा हूं मैं। तो आई थिंक व्हाट्स टफर इज दैट क्योंकि आप बार बार कुछ दिनों के लिए शूटिंग कर रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर शूटिंग कर रहे हैं, रुक रहे हैं, तो वो कैरेक्टर में रहना और ये याद रखना कि आपने क्या किया था 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, वो मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल बात होती है। But then how was the physical transformation for you? Because obviously when you started the journey of Empire, तब आपकी obviously एक look थी जिसको आपको maintain करना पड़ा, not only the face look, like the entire physical transformation also, जो over the span जहाँ पे लोग घर पे थे lockdown के कारण, for example कुछ अपनी डाइट को चीट कर रहे होंगे, कुछ हो सकता है अपने जिम रूटीन्स को चीट कर रहे होंगे, बट यू हैड टू बी एवरीथिंग इन शेप, लाइक सब कुछ प्रॉपर रखना है, लुक्स प्रॉपर रखना है, फिजिकली अपने आप को फिट रखना है, सब प्रॉपर रखना है। तो वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इस लंबे प्रोसीजर को मेंटेन रखना और फ्लो में रखना? एक्चुअली चैलेंजिंग सबसे ये था कि जो बचपन के पार्ट, जो यंगर पार्ट्स हैं, उसके लिए आई लॉस्ट सम वेट, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं था एंड आई हैड टू लूज सम 7-8 किलोज। मेरे पास सिर्फ मुझे लगता है 3 हफ्ते थे, तो वो 3 हफ्ते में मुझे I was doing cardio for 2 hours, I was training for 2 hours, I had stopped all salt, reduced water, cut out all carbs. So by the time you come to the set, you're very cranky क्योंकि आपने 3 हफ्ते से ना तो ठीक से पानी पिया है, ना आपके कार्ब्स सारे जा चुके हैं, नमक जा चुका है, तो that was very challenging। और मुझे याद है हम लोग
पंचगनी में शूटिंग कर रहे थे, तो जिस दिन वो शूटिंग खत्म हुई, नेक्स्ट 1 week आई ऑर्डर्ड पारसी फूड फॉर लंच एंड डिनर फॉर एवरीवन, फॉर द होल यूनिट, क्योंकि मैंने बोला अब मैं अकेले नहीं खाऊंगा, सब मेरे साथ खाएंगे। क्योंकि 3 हफ्ते से मैंने ढंग से खाना नहीं खाया, तो I made sure that I was well fed and everybody else was well fed. Moving ahead, if I talk about the characters and moving ahead talking about the roles that you've played as an actor, Kunal, जब आपको एक role offer होता है, how do you approach a character? How do you look into it? Like, do you do your R&D or what is your preparations towards it? I think it depends on the character, of course. जो मुझे इस कैरेक्टर के बारे में सबसे अच्छी बात लगी थी, जो जिस तरह से लिखा गया था, वो ये था कि जब भी आप किसी बादशाह को देखते हैं, या कोई भी एनी टाइम दैट समवन राइट्स द रोल ऑफ अ किंग, इट्स वेरी टिपिकल कि वो इस तरह से बात करेगा और इस तरह से चलेगा, एंड ही विल बी वेरी स्ट्रांग, एंड ही विल हैव अ कमांड व्हेन ही स्पीक्स। बट जो मुझे अच्छी लगी इस रोल की बात, वो ये थी कि even though he's a king and he's an emperor, he's not sure about himself at all. He's very unsure about himself. He keeps feeling like ये मुझे गलती से मिल गया, ये मैं लायक नहीं हूँ इसके, and he's always doubting himself, and he's actually a character that's quite weak, because whenever he goes through some sort of emotional turmoil, he falls apart, and then he needs the women in his life to bring him back on track and bring him back together. So I found that very interesting कि आप एक बादशाह का कैरेक्टर लिख रहे हैं, लेकिन आप उसको फिजिकली तो स्ट्रांग है लेकिन इमोशनली बहुत कमजोर है, और मेरे लिए वो जो कॉन्ट्रास्ट था वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑनेस्टली, बिकॉज एज एन ऑडियंस आपको आदत है कि आप जब किसी भी कैरेक्टर को देखते हैं जो बादशाह है, आपको आदत है कि वो एक तरीके से उसको होना चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल होता है ऑडियंस को कन्विंस करना कि देखिए ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। वो बादशाह अपनी पब्लिक लाइफ में हो सकता है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में he can be somebody that's very weak, and I'm glad that people have actually liked that and picked that up a lot. Well, in that regard, because obviously her character में, it's not like that you follow the script or you do follow the script, I don't know, but then are you like a big critic of your own work? Do you watch your work, or you are out of those actors जिनको अपना काम देखना नहीं पसंद है? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ मैं सोचने लग पड़ता हूँ। इनफैक्ट क्या हुआ कि जब हम रिलीज के दो हफ्ते पहले मैंने अपने डायरेक्टर को फोन किया, and I said, shit यार, I just found the accent that I should have had for Babar. So she's like, you're crazy. शूटिंग को 3 महीने हो चुके हैं, खत्म हो चुका है शूटिंग, अभी रिलीज होने वाला है शो, and you're calling me and you're saying that I've just found the accent for Babar. So I'm actually very critical about my work, and I'm never happy with it, which is a good thing and a bad thing, क्योंकि it's a good thing because then you try harder and you work harder. It's also a bad thing because you can never really look at your work and feel like मजा आया। वो मेरे साथ बहुत कम होता है, and that's something that I'm trying to change. But then are you like a director's actor, or do you prefer improvising a lot in your scenes? No, I mean it really, I mean I've been an assistant director, and the one thing that being an assistant director teaches you is that this is a director's medium, and it's the filmmaker's vision that has to be there on screen, not your vision. क्योंकि अगर आपका अलग विजन है और फिल्म मेकर का अलग विजन है, तो वो कुछ खिचड़ी बन जाएगी बिल्कुल। So I make sure I follow what the director wants from the character. I try and sit with the director for weeks before that and constantly try and understand how the director is seeing this character. And uske baad, I try and start doing my preparation so that what I am doing is in line with what the director wants. Okay, 2 things here that, one, if I talk about you having the switch on and off switch, because जैसे आपने कहा 3 महीना हो चुका था शूटिंग को खत्म है, फिर भी वो बाबर का किरदार आपके माइंड में स्टक था, and you were seeing those accents for him. So like, do you cut yourself very easily from the roles that you have played when you are done with them, or do they go back to you final when you finish with them back home in your the रोजमर्रा की जिंदगी? Also साथ ही साथ how do you switch on and off, like how do you cut yourself from those roles, like how difficult is it for you? Well, usually when I'm on the set, then I'm in character and I try and stay in character because I also enjoy it. आपको मुझे याद है रघुवीर यादव सर ने मुझे कहा था जब मैं शुरुआत कर रहा था कि एक एक्टर बहुत लकी होता है
क्योंकि सब अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक एक्टर जो है बहुत अलग अलग जिंदगियां जीता है. And that's something that's always stayed with me. And so when I'm on a set, I try and stay in that zone. Not only because I feel like it's good for the performance, but because I enjoy it also. लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है, मैं घर आता हूँ, it's over and done with. Obviously in my head I'm like, how could it have been better, or what could I have done differently? But ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कैरेक्टर बहुत डिप्रेस्ड है तो मैं घर आया और बहुत डिप्रेस्ड हूँ. बल्कि ऐसा होता है कि अगर कोई इमोशनल सीन भी है जहाँ पे आपको रोना है और यू हैव टू ब्रेक डाउन, as soon as that scene's over, you're very happy if you've done it well. I don't think there's ever been a time when I've come home and I've been like, oh my god, that was such a depressing scene and I'm depressed now. मतलब मेरा मानना है कि देखिए, आप एक सेट के ऊपर हैं, आपको पता है, चाहे आप कैरेक्टर में हो, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर 100 लोग हैं, फिर उसके बाद आपके सामने कैमरा है, फिर सिनेमेटोग्राफर जो है वो आपको बोलेगा देखिए आप खाली 2 कदम लेना, क्योंकि 2 कदम बाद मैंने लाइट लगाई है. तो आप, even if you're in a character, there's a part of you that knows that, look, I'm shooting for a film. Okay, in that regards, like when I hear the name of the series Empire, the first thing जो मेरे दिल में आएगी politics, चाहे वो कैसा भी politics हो, घर का politics हो, भाइयों बहनों के बीच में हो, friends में कुछ भी हो, but politics. So has it ever happened, Kunal, that अपनी real life में you have had, or maybe you have been a part of something political, like वो जो conspiracies की जाती है, चाहे वो school में हो, college में हो, anything for that matter, have you been a part of that scenario ever? मुझे पॉलिटिक्स का बहुत शौक है, तो मैं पॉलिटिक्स को बहुत ही गहराई से फॉलो करता हूँ, चाहे वो इंडियन पॉलिटिक्स हो या वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, या ईरान में क्या हो रहा है, या इजराइल में क्या हो रहा है, या अफगानिस्तान या टर्की, मैं सबकी पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ. तो आई डोंट थिंक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. और जहाँ तक आई थिंक व्हाट वी डोंट रियलाइज इज दैट as soon as there's 2 people involved, there will be politics. In the sense that any relationship, you want something in that relationship, somebody else wants something else in that relationship. There is some level of manipulation, no matter how close you are to that person, that sort of seeps into that relationship. You might be honest in that relationship, you might be true to that relationship, but there is a little power game that sort of seeps into it, and there is a little any sort of politics that sort of seeps into it. So but then have you done that? But have you done that? Like the manipulation game, or maybe the politics, or anything else? But have you done that? All the time. I think we all do, whether we realize it or not. I think we all play some level of politics all the time. But I would love to know here that ये तो हो गई Empire के बाद जो fans ने काफी पसंद किया, they're gonna love. जिन्होंने नहीं देखा, they're gonna love your character all the more. But if I'm not wrong, you have yet another handful of series that are gonna be coming out soon, because बहुत time के बाद कुणाल हमारे हाथ लगे, and we are gonna watch a lot of work out of you now. So उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? Upcoming projects के बारे में क्या बताना चाहेंगे? एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म एंथोलॉजी है, जिसको जो फिल्म मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल, दैट्स बीन डायरेक्टेड बाय साकेत चौधरी, हु इज अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर. और मुझे जो ये कहानी के बारे में बात बहुत पसंद आई, वो ये थी कि हम जब भी पिक्चरों में लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करते हैं, हम हमेशा सक्सेसफुल लोगों को एक्सप्लोर करते हैं या सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करते हैं. ये एक ऐसी पिक्चर है जो फेलियर को एक्सप्लोर करता है. जब आप अपने पर्सनल लाइफ में फेल होते हैं, अपने प्रोफेशन में फेल होते हैं, तो हाउ डज दैट इफेक्ट योर रिलेशनशिप्स एंड हाउ डज दैट चेंज यू एज अ पर्सन. सो दैट वाज समथिंग दैट आई फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू डू. उसके अलावा मैं कुछ कहानियां लिख रहा हूँ. आई एम आल्सो राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग. वन ऑफ दीज विल होपफुली गो इनटू प्रोडक्शन नाउ इन November. We'll be able to start shooting for that. So yeah, that's what's happening right now. But Idhari, I would love to know, from actually being in front of the camera to actually facing the camera to actually giving best of shots, bad of shots, everything, like सारा वो struggle देखना, to quickly reaching out to the point where you are coming up with your own production house जहाँ पे आपका few projects अब सामने आएंगे. How has that journey been for you, Kunal? Well, it's amazing. देखिए, as an actor, I always say you're a very helpless piece of the puzzle. लोगों को लगता है एक्टर बहुत पावरफुल होता है, some actors are the ones at the top, but otherwise आपके लिए स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, फिर कोई और डायरेक्ट करता है, कोई और प्रोड्यूस करेगा, कोई और म्यूजिक देगा उसका, कोई और एडिट करेगा, रिलीज कोई और करेगा. सो एज एन एक्टर द ओनली चॉइस यू हैव इज द स्क्रिप्ट्स दैट यू चूज, एंड वो भी आपको क्या ऑफर हो रहा है उसी में से आप चूज कर सकते हो. तो
it's really not your vision. You're part of somebody else's vision. But when you turn producer or you're a director, you actually have a chance to put your own vision out there. And I think that for me is something that is exciting. So do you feel that now you have reached the power game pe sabse top pe now, because now you can show your vision out there, now you can make people see what you actually see? Yeah, I think creatively that's exciting and satisfying, because as a creative person there's a lot that you want to say, and you might not get an opportunity to say that as an actor, but as a producer or somebody that's writing, you have an opportunity to really put out your point of view on things. So that is a phase that I'm really looking forward to. Well, on that note, I would love to know, Kunal, any parting words for the fans, because they're going to simply love, if they haven't watched Empire, they're going to love watching you, and then upcoming projects being up, काफी कुछ lined up है. Any parting words for them? Well, just thank you for always being supportive. I mean, I get so many messages on Instagram and social media now. It's a chance to interact with the people that admire your work. And just thank you. I mean, I know I keep disappearing and appearing again. But thank you for always being there, and thank you for being so supportive always. Well, it's a pleasure having you here with us. I wish you all the luck for the projects, also for the new venture of your production house. I really hope to see really good work out of it now. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Well, thank you so much guys for watching today's chat session. आज मेरे मेहमान थे कुणाल कपूर, जिनको आप लोग देख रहे हैं एम्पायर सीरीज में, और जो बहुत जल्द अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च करने वाले हैं. Well, I really hope him all the best. And आप हमारे साथ नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आप क्या सोचते हैं कुणाल के इस सीरीज के बारे में. And if you haven't watched, we would say please go watch the series, because Kunal has worked really hard over his character. Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You do stay tuned to Telechakkar for all the more updates about the tele world. Know all about the tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.